Hello friends, welcome to my Japanese language class. This program for JLPT N4 students and not N4 student. Today we are going to learn lesson 45 or Dai Yonju Gokka. In this lesson we are going to learn this grammar baiwa and noni. In baiwa, verb dictionary form, verb nai form, verb ta form, e adjective, na adjective, and noun take no, and noni takes plain form, verb, e adjective, na adjective, noun all are take plain form, and some kanji. Baiwa. Baiwa is an expression used to talk about a hypothetical situation. The sentence after it indicates how to cope with such a situation or its consequence. Baiwa, we use this grammar in a situation where it is not yet decided, not it is happened. It is a situation that is hypothetical. It means it may happen, it may occur. Okay, in that situation we use this grammar baiwa. In this grammar, verb take dictionary form, nai form, ta form, e adjective, e will be there, and na adjective, na also along with it, and noun take no, no particle after it, because by itself a noun. This grammar by हम कहाँ पे यूज करते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम यूज करते. बाईवा, इससे पहले वर्ब आता है तो डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म जाएगा. ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव में ई एंड ना अलोंग अटैच रहेगी, और नाउन में नो पार्टिकल आएगा क्योंकि बाई इटसेल्फ है नाउन. होप यू अंडरस्टैंड वेयर वी यूज दिस ग्रामर. सपोज you are late in a meeting. Usually you are in time, but sometimes you are late in meeting. So this is a hypothetical situation. Some accident occur on the way, maybe bus late or train late on the way, or maybe traffic jams due to some reason on the way, or something XYZ happen and you are late. In that situation, how you explain with this grammar baiwa. Okay, let's learn some sentence so that we can understand better. चलो कुछ सेंटेंस पढ़ते तो हम अच्छे से समझ पाएंगे. काइगिनी मानी आवा नाई बाईवा रेंडा को सिते कुदासा. इफ यू कैनॉट बी इन मीटिंग इन टाइम प्लीज इन्फॉर्म अस. अगर आप मीटिंग में सही समय में नहीं पहुंच पाओगे तो हमको इन्फॉर्म करें. ऐसा. फर्स्ट सेंटेंस, बिफोर बाईवा ए सिचुएशन कम्स. दिस इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन. काइगिनी मानी आवा नाई, नाई पर. ओके, मानी आवा नाई बाईवा रेंडा को सिते कुदासा है. दिस इज हाउ यू कोप अप ए सिचुएशन और हाउ यू डू, व्हाट यू डू इन दिस सिचुएशन. इट विल कम आफ्टर बाईवा. काइगेनी मानी आवा नाई ए है एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. लेकिन रेंडाकू सित्ते कुदासा ए है आपका काम. आप जो करते, आप जो हैंडल करते वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसको एक्सप्लेन यहाँ पे करते आफ्टर बाईवा. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस ग्रामर एंड वेयर टू यूज. Let's learn some more sentence. Jikani okureta baiwa kaijo ni hairemasen. Jikani okureta baiwa kaijo ni hairemasen. Jikani okureta baiwa, if you are late. Kaijo ni hairemasen. Kaijo, meeting place. Okay. If you are late, you won't allow to the hall. अगर आप लेट में आओगे तो आपको हॉल में अलाउ नहीं है. ठीक है, ऐसा. जिकानी ओकुरेता बाई
It is if you are late. Kaijoni hairemasen. It is the consequence. If you are late, you won't allow to the hall. Hairemasen. Okay? You can't enter to the hall. Okay? अगर आप देर में आते हैं तो आपको अलाउ नहीं है मीटिंग प्लेस में हॉल में एंट्री करने के लिए. ठीक है. काजी नो बाईवा एरेबेता वो चुकावा नाई दे कुदासा. In case of fire, don't use the elevator. If there is fire, आप elevator यूज मत कीजिए. ठीक है. अगर वहाँ पे फायर है, आग लगा है तो elevator यूज नहीं कर मत कीजिए. ठीक है. This is a situation. काजी नो. This is a situation. काजी नो बाईवा. If there is fire, अगर आग है तो एरेबेता वो चुकावा नाई दे कुदासा. एरेबेता वो चुकावा नाई दे कुदासा. आप एलिवेटर मत यूज कीजिए. ये है कंसिक्वेंस. कैसे आप हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को. ठीक है. दिस इज द कंसिक्वेंस. एरेबेता वो चुकावा नाई दे कुदासा. ओके. हाउ यू हैंडल द सिचुएशन. काजी नो बाय. ओके. होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज by. Okay. Please pause the video and write 3-4 sentences. Understand where to use and how to use. By is a grammar form we use in a hypothetical situation. Another grammar, noni. Before noni, verb, adjective, na adjective, noun comes. It takes plain form. One exception is there. Plain form generally na adjective and noun, they change to the, but instead of the it takes na. Let's learn where we use this grammar. Noni follows either verbs, adjective or nouns. Noni is used when the second clause started contrary to what is expected from the first one. It means whatever may be or comes over here, it is just contrast of this sentence before the noni sentence. इसका मतलब ये है कि नोनी की पहले की जो सेंटेंस आता है, जो सेकेंड का सेंटेंस पहले से कंट्रास्ट आता है, मतलब ऑपोजिट सेंटेंस आता है. जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सेंटेंस नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड सेंटेंस आता है. इस तरह का जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे. The sentence before noni and the sentence after noni is contrast. The sentence before noni and the sentence after noni are contrast. It comes an unexpected sentence, what we expect from this sentence. Okay. And verb take verb, EKUSE, na KUSE, noun. Okay. All are take plain form, but one exception is there. Na and da, instead of da it takes na. Please memorize this thing. Okay. Let's learn some sentence so you can understand better. चलो हम कुछ सेंटेंस पढ़ते तो अच्छे से समझ पाएंगे. ओखाने ओ इरेता नोनी किपुगा देमासेन. I put in the money but I don't get a ticket. मैंने पैसा भरा बट टिकट नहीं आया, निकला नहीं. In this sentence, ओखाने ओ इरेता, it means what? You must expect a ticket. Kipuga demasen, it is contrast to the first one. Our expectation is kipuga demas, but as noni is here, so kipuga demasen. It is just opposite of our expectation, just contrast to this sentence. Okay. जब हम पैसे भरते हैं तो हमको टिकट एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन टिकट नहीं निकलता है. वही है कंट्रास्ट सेंटेंस. ओके. सो किपुगा देमासन, इट इज ए कंट्रास्ट सेंटेंस ऑफ दिस. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड द ग्रामर. लेट्स लर्न सम मोर सेंटेंस. सांजुप्पम मातेरु नोनी बासुगा किमासेन. Even I have been waiting for 30 minutes, but the bus does not come. Sokutachude tegamio dasita noni
Mikkamo khakari masita. Even I sent letter by express delivery. It took 3 days. Sanjupu mateiru noni basuga kimasen. Even I have been waiting for 30 minutes, but the bus does not come. Look at the sentence. Sanjupu mateiru. This is your action. You wait for 30 minutes. What do you expect? That bus should come. But basuga kimasen. The bus does not come. It is the contrast of this sentence. Okay. So where we use noni? We use noni in a situation where the second sentence is contrast to the first sentence. Means the second sentence, it is a unexpected sentence of the first sentence. यहाँ पे लिखा है संजपो मत्तेइरु, मैंने 30 मिनट्स वेट किया, फिर भी संजपो मत्तेइरु नोनी बासुगा किमासे, मैंने 30 मिनट वेट किया फिर भी बस नहीं आया, ऐसा. ठीक है. सो बस नहीं आया वो तो आप एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं ना. सो आपका अनएक्सपेक्टेड जो सेंटेंस है, कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस, हो यहाँ पे आएगा. ठीक है. चलो हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. लेट्स लर्न द नेक्स्ट सेंटेंस. सोकुताचु दे तेगामियो दासिता नोनी मिक्कामो खाखारी मासिता. इवन आई सेंट लेटर बाय एक्सप्रेस डिलीवरी इट टुक 3 days. When we send a letter, Sokutachu de Tegamio dasita noni. Sokutachu, speed delivery, express delivery. So when we send a letter in Sokutachu, we expect it will take 1 day. No? But Mikkamo Khakari Masita, it took 3 days. It is an unexpected result. No? So after noni, a unexpected statement, a unexpected result of the first sentence will come. जब हम एक लेटर भेजते हैं सुकुताचु में और स्पीड डिलीवरी में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं 24 आवर्स में वो पहुंच जाएगा, 1 डे में पहुंच जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 2 days लगेगा, नहीं तो 1 day से सफिशिएंट है. लेकिन वो 3 days लिया, more maximum. No? Mikkamo khakari masta. It took 3 days. 3 दिनों लगा लिया. So this sentence, it is a unexpected result of this. So ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इसीलिए नोनी यूज हुआ है. नोनी के ग्रामर में सेकेंड सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस में unexpected sentence आता है, that is contrast sentence of this. Okay. Hope you understand the grammar properly. Please pause the video and write 3-4 sentence by yourself, so it will help you a great when you will use this grammar and how you will use. Okay. 2-3-4 सेंटेंस लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे ए ग्रामर यूज करते हैं. ठीक है. Here I have given some questions. Please do by yourself. Simply complete the sentence. Okay. Please pause the video and do by yourself. Then check with the answer. I have given over here. आप पॉज करके वीडियो खुद कीजिए. इसके बाद मैं यहाँ पे जो आंसर दी हूँ उसमें चेक कीजिए. ठीक है. आंसर इचिबा कानपुर जुनबिओ सित्ते नोनी आमेदे चिउसिनी नारी मास्ता. सित्ते इमा सित्ते इता. निबान मो जुजी नानोनी ओतोतो मादा ओकिते इमासेन. सानबान वाताशी वा ग्यून्यू गा किराई नोनी हाहावा नोमेतो ई मासिता. 4 番 सिगाचुनी नारी मासिता. सिगाचुनी नात्ता नोनी माता साकुरा गा साइते इमासेन. 5 番 आमेगा फुत्तेइरु नोनी खारेवा
Churi ni ikimashita. Shitte imashita. Shitte ita. Juji. Juji na noni. Kirai desu. Kirai noni. Narimashita. Natta. Amega futte imas. Futte hiru noni. Okay. Hope all of you done correctly. Meaning of this kanji: prefecture, no kunyomi, onyomi ken, kencho, prefecture office. Meaning of the kanji: Iceland, kunyomi sima, onyomi to, hanto, a peninsula. Meaning of this kanji: capital, no kunyomi, onyomi kyo or ken, Tokyo, Tokyo. Meaning of this kanji: appearance, Mr. Ernest. Kunyomi sama, onyomi yo, yosu, appearance. Now time to say sayonara. Hope this lesson give you some knowledge. Let's meet in next class with a new lesson, new grammar and some more new kanji and some new exercise. Okay. Till that time, stay healthy, stay safely. Sayonara. Goodbye.